free-to-play games, especially free-to-play shooter games. The gaming market is filled with them. लेकिन एक चीज़ जो मैं ये गेम्स के बारे में हमेशा कहता हूँ, भले ही आप देखोगे कि ये गेम्स ऑन पेपर फ्री होंगे, लेकिन जब आप ये गेम खेलोगे यू रियलाइज यू नीड टू पे विद योर मेंटल हेल्थ टू प्ले दीज गेम्स. मैं कोई रीज़न से इन गेम्स को साइकोलॉजिकल हॉरर गेम्स बुलाता हूँ. So when I, Aryan Sahu, tell you that I, the man who majorly plays single player games after quitting his toxic relationship with these horror games, tell you that the finals might be one of my favorite games this year, you better believe it. हो सकता है you don't like competitive FPS games और आपको सिर्फ single player games खेलना पसंद है, but I still recommend giving this game a chance because it is a good game, period. आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? Keep watching. Back in 2023, जब मैं competitive FPS games से addicted था, I actually played this game. The open beta of the finals was released in 2023 and I got quickly bored of it because उस game में उस time ज़्यादा content था नहीं, but the core mechanics were still a lot of fun. And since then, Embark Studios, the devs of this game, have embarked on a mission, should I say, to polish this rough diamond of theirs, and I am here to tell you that they might have finally done it. मेरे हिसाब से अगर मुझे फाइनल्स का गेम प्ले एक स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करना पड़े, that would be chaotic but fun. Destruction and movement is at the core of this game, and it is so well balanced in this game that I cannot believe it. And honestly, it makes a lot of sense. पता है क्यों? Because ये game has been developed by ex-Battlefield and Mirror Edge developers. So you can clearly understand where the inspiration comes from. I mean, come on, जब मुझे पता चला कि Battlefield 4 में you can collapse an entire giant skyscraper, my Call of Duty addicted mind could not handle that information. The gameplay of the finals is like the perfect combination of Valorant, Battlefield, Apex and Call of Duty. But at the same time, it is much more different than these games. The finals बहुत ही innovative, original और fun game है. That is why I like this game so much. ऐसा FPS मैंने पहले कभी खेला ही नहीं है. It takes all the fun and favorite aspects from your favorite FPS games and mashes them together like a beautiful abstract painting. इस गेम में 3 क्लासेस या कंटेस्टेंट्स हैं, लाइट, मीडियम एंड हैवी. और अगर अब आपको लग रहा है कि इस गेम में वैरायटी बहुत कम है, you'd be thoroughly mistaken because the amount of builds that you can do with each class is genuinely staggering. The light class उनके लिए है who like to be quick, get kills, outclass their opponent whether that is by their aim or by movement. And yes, 90% of the time मैं इस गेम में light class ही खेलता हूँ because after all I am a quick scoping god. This is the wrong footage, guys. Then you can also channel your inner Ellie by using the bow and arrow build. I'll get all you motherfuckers! Motherfucker! God damn. I think मुझे अभी कह देना चाहिए I am not that good at FPS games anymore. In a market made for the Glenn Maxwells and Abhishek Sharmas of the game, I am a Chiteshwar Pujara. But again, the amount of weapons and gadgets you can unlock, not only for light but for medium and heavy as well. Like there are so many cool gadgets in this game, it's genuinely crazy. And there are so many builds that you can try. Like मेरा एक personal favorite build जो मैंने खुद बनाया है, उसको मैं बोलता हूँ the kick build. The kick build is very easy. You equip a dagger and a smoke grenade and then go behind an enemy and say the iconic dialogue. आप kick के पीछे, kick आपके पीछे. Too much fun. And boom, 24 kills. You're welcome. Then there is a jet knives build, sword build, SMG rat build, shotgun build, and so much more. Every class has their own ability. If you are a medium class and a sadist, you have the Killjoy turret and the Team Fortress 2 healing beam. As heavy, you get the Mumbai local ability to push and destroy anyone in your way. And as a light contestant, you get the Jet ka dash ability, the grappling hook from the Batman games, और मेरा personal favorite, Mr. India ability. Oh, I think you have a lot of things to worry about. अरे गन तो reload कर लो.
ऑफ कोर्स मैं लाइट क्लास की तरफ थोड़ा बायस्ड हूँ, बट मीडियम एंड हैवी क्लास are equally good, and they're especially good if you like to be a good support system and seek validation from the people on the internet. I know that's why you play support. It's okay. I hope your self-esteem rises one day. As a medium contestant, आपकी movement speed थोड़ी कम होती है, hitbox बड़ा होता है और health भी थोड़ी ज़्यादा होती है. ये ideal class है if you are someone who has no experience playing any FPS. लेकिन एज अ मीडियम कंटेस्टेंट आप सेकिरो बिल्ड खेल सकते हो. सेकिरो बिल्ड पता है क्या है? यू सी इन द फाइनल्स there is a weapon available to the medium contestants and only the medium contestants, and that is called the dual blades. And the dual blades strikes fear in the hearts of mere mortal men. पता है क्यों? Because you can parry bullets with this build. Like what the fuck was that? और फिर आते हैं हैवी कंटेस्टेंट्स. इन्हें कोई नहीं पसंद करता. ये लोग खुद को भी पसंद नहीं करते हैं. खुद का मूड खराब रहता है तो दूसरों का भी बर्बाद करने आ जाते हैं. दे वॉक अराउंड द मैप विद देयर जायंट हिट बॉक्स, हेल्थ बार, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन देयर वे. कभी कभी रॉकेट लेके, कभी कभी स्पीयर लेके, फ्लेम थ्रोवर लेके, LMG लेके, और कभी कभी तो रायट शील्ड लेके. Dumbass. I've played CS 1.6. मुझे पता है कैसे रायट शील्ड के अगेंस्ट खेलते हैं. इस गेम में बहुत सारे मैप वैरायटी है. देयर इज अ ब्लेड रनर मैप, देयर इज अ गोस्ट ऑफ टुशिमा मैप, देयर इज अ वन मैप दैट आई रियली हेट, देयर इज अ जापानीज साइबरपंक मैप, देयर इज अ कॉर्पोरेट मैप एंड सो मच मोर. और हर एक मैप भरा होता है गैस सिलेंडर्स से, स्मोक सिलेंडर्स से, गू कंटेनर्स से एंड एक्सप्लोसिव कंटेनर्स से भी. जस्ट मेक श्योर यू डोंट स्टैंड बिलो देम. ओह, एक्सप्लोसिव सिलेंडर्स, लेट्स गो. ओह माय गॉड, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ. नो. अगर आप उनमें से हो जिन्हें वो गेम्स पसंद है जिनमें हाई स्किल सीलिंग होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ मैकेनिक्स टू मास्टर, एसेंशियली गेम्स विद अ ह्यूज स्किल गैप, then this game is perfect for you because the amount of mechanics that you can master in the finals is insane. तो अगर आप एक competitive gamer हो, then you will 100% get addicted to this game. Now I don't know if that's a good thing or a bad thing, but I am just letting you know that there are a huge skill gap and a lot of mechanics to master. इस गेम का गो टू मेन मोड है कैश आउट. एक मैप पे देयर विल बी 4 टीम्स ऑफ 3 competing against each other. मैप पे वॉल्ट्स अनलॉक होंगी. आपको और आपकी टीम का काम है गेटिंग द वॉल्ट एंड कैशिंग इट इन एट अ कैश आउट बूथ अक्रॉस द मैप. और फिर आपको अपना कैश आउट बूथ प्रोटेक्ट करना है फॉर 2 minutes while the other opponents try to steal it, and whoever gets the cash out gets the cash, and you also get rewarded with more cash if you team wipe any of the other 3 teams. और अगर आपका टीममेट मर जाता है, दे बिकम अ स्टैचू एंड देन यू कैन रिवाइव देम बाय प्रेसिंग द होली गेमर E बटन. और अगर वो पॉसिबल नहीं है, दे कैन कम बैक इनटू द गेम बाय यूजिंग देयर लिमिटेड रीस्पॉन कॉइन. कैश आउट इज इजीली द बेस्ट एंड द सिग्नेचर मोड ऑफ दिस गेम, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मोड्स हैं फॉर वेराइटी, जैसे TDM हो गया, हार्ड पॉइंट हो गया, सारे क्लासिक कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर वाले मोड्स. The finals has an arcade theme with random events like Meteor Strike, Alien Invasion, retro games taking place to make the matches more interesting. लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है ना इस गेम की, it's the sound design. The sound design is so good. For a game that is so chaotic, you as a player will never feel overwhelmed by the amount of sounds that you're hearing, unlike one other game that I know. ये गेम हम भारतीयों के फेवरेट प्राइस पे आता है, फ्री. और अब आफ्टर ऑल इट इज़ अ फ्री टू प्ले गेम, देन येस, there is a battle pass, there is in-game currency, and there is way too many customization options, from how your character looks to the little charms on your weapon. लेकिन आप जितना भी कपड़े ट्राई कर लो, कितनी भी नई कैरेक्टर कस्टमाइजेशन कर लो, योर कैरेक्टर, एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज सी दिस और नॉट, ऑल द कैरेक्टर्स लुक लाइक देयर फ्रॉम GTA ऑनलाइन, राइट? मुझे फ्री टू प्ले गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर ऑल स्टूडियोज उनके बिना पैसे कैसे कमाएंगे, एंड स्पेशली अ स्टूडियो एज गुड एज एम्बार्क विच हैव सच गुड पास्ट एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, दे शुड डेफिनेटली हैव अ गुड बजट. लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस गेम की बिल्कुल नहीं पसंद है वो है इस गेम का UI. Man, the UI makes it feel like you're playing a phone game. It should not take me 6 or 7 screens to get to the main lobby once a game is done.
मैं समझता हूँ ये सब किया जाता है टू कीप द प्लेयर इन्वेस्टेड एंड गिव देम अ फील ऑफ प्रोग्रेशन, बट कम ऑन, इतना ज़्यादा? मुझे पता है आपके मन में एक सवाल है, the question that you want an answer for. So Aryan, this game has a huge skill gap, it's free to play and has competitiveness bred into it. So does this game have a ranked mode? No, of course it does. Every free to play game has a ranked mode. इस गेम के रैंक्ड मैचेस कैश आउट होते हैं एंड मैन दीज गेम्स गेट स्वेटी एंड competitive. It has all the classic ranked games moment, horrible solo queuing experience, terrible teammates, the time that you are the terrible teammate, clutch moments, cracked teammates in your team, being bad at the game and blaming the internet. सब कुछ पता है मुझे, लेकिन ऑफ कोर्स रैंक्ड मैंने ज़्यादा खेला नहीं बिकॉज आई हैव चोजन द क्वाइट लाइफ, द लाइफ इन विच आर्थर डज गेट ऑन द ट्रेन विद मैरी. होल्ड पोजीशंस. अरे पागल पागल, अबे क्या आईटी कर दे. अरे मिष्टी गलती कर दी मिष्टी. Yeah, I don't need this in my life anymore. मैंने हमेशा कहा है playing the ranked modes and grinding to get to the higher elo in a free to play competitive game is a lot like building a bridge in Bihar. आज खड़ा है, हो सकता है 1 महीने बाद फिर गिर जाए, आप फिर बनाओगे, फिर हो सकता है कि वो ब्रिज चोरी हो जाए. It's like building a castle with sand. These games are designed in such a way that they want you to keep playing them. Their worst nightmare is एक प्लेयर 2-3 गेम खेल के उठ जाए, बोले कि अब बस हो गया है. They want you to keep playing these games long enough till they can get to your wallet for that battle pass, cosmetics and all of those things. लेकिन ये भी पॉसिबल है, हो सकता है कि आपको रैंक्ड मोड खेलने में मज़ा आता हो. मे बी दैट इज़ योर सोल्स गेम एक्सपीरियंस. देन आई टोटली अंडरस्टैंड, गो फॉर इट, हैव फन मैन, आई होप यू गेट टू द हाइएस्ट elo. लेकिन एज अ फॉर्मर एडिक्ट, एंड डोंट गेट इट मिस्टेकन, आई वॉज एन एडिक्ट. I do not wish to return to that state ever again. I am not pulling my hair out to get a small little different JPEG. So मैं तो इस गेम के ranked mode से दूर ही रहा. Now the only time you will catch me getting competitive is in Red Dead Redemption 2 against the Mexican gunslinger. हो सकता है you disagree with me and that is totally fine. Maybe you enjoy the grind and the challenge of pushing yourself to the limit to see how good you are. Then I totally understand. Maybe you are a fan of the highs and lows, the journey of getting to a high elo. Then I totally respect it. लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, not that good at FPS but want to play something fun, play this game like how I played this game. Hop on for a game or two, preferably with your friends, play the unranked mode, and the moment you miss the easiest shot of your life that might just push you over the edge, shut the game off. That being said, ये करना with Valorant, Call of Duty or Apex might be easy, but definitely not with the finals. And that is truly a huge compliment to the devs of this game, and I cannot wait to play Arc Raiders. So definitely play this game before it unfortunately loses to the giants in the market, and trust me when I say this, बहुत मज़ा आएगा ये गेम खेलने में. Most of the times.